Hello, dear students. Welcome back to our news channel. Students, in today's podcast, we are diving deep into one of SpaceX's most exciting achievement. Right? What is SpaceX? It is a company founded by Elon Musk, right? That we know, and we have discussed this many times in our podcast. Now, students, what happened is SpaceX has achieved a great thing. Recently, its most exciting achievement is catching the Starship booster with Mach. Now, this breakthrough in rocket technology might sound like something from a sci-fi movie, but it is happening now and it is changing how we think about space travel. So buckle up and let's explore how it all works, why it matters, and what this means for the future of space exploration. Now, let's start with the basics. What is a starship? स्टारशिप क्या होता है? यहाँ पे जैसे वर्ड मेंशन है, यस, कैचिंग अ स्टारशिप बूस्टर। तो स्टारशिप का मतलब क्या होता है? स्टारशिप इज बेसिकली द नेक्स्ट रॉकेट सिस्टम विच इज डेवलप्ड बाय स्पेसएक्स। स्पेसएक्स ने एक रॉकेट सिस्टम डेवलप किया है, स्टारशिप and it is designed to carry humans and to far off destination in the solar system में ट्रैवल करने के लिए उस तरह से उसे डिजाइन किया गया है कि ह्यूमंस के साथ साथ वो की कैरी किया जा सके। And the rocket is made up of two main parts, and two main parts are rockets के, जैसे for example I'll explain you with the help of an example। जैसे ये एक रॉकेट है, right? बूस्टर, now this is super heavy booster क्या है? बॉटम पार्ट, ओके, powerful bottom that helps the rocket escape Earth's gravity। अर्थ की ग्रेविटी आप इस डायग्राम में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि रॉकेट को अर्थ से ऊपर उठने के लिए ग्रेविटी क्या जानना पड़ता है, राइट? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी क्या करती है? किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अगर स्पेस है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में लड़कर ऊपर उठना पड़ेगा, राइट? सुपर दिस इज द बॉटम, बॉटम हाफ है जो कि हेल्प करता है रॉकेट को अर्थ की से एस्केप करने के लिए, राइट? एंड देन वी हैव स्टारशिप स्पेस। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट क्या है? दिस इज द पार्ट and cargo to space once the booster has क्या कैरी करता है? पीपल, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको, या फिर अगर एस्ट्रोनॉट नहीं है, कोई कार्गो भेजना है, सब लोड है, तो वो सारा पर पार्ट में स्टोर किया जाता है जिसे हम कहते हैं शिप, स्टारशिप, राइट? स्टारशिप। Now together these two parts form a fully reusable system. What is reusable system? Meaning that they can be launched, recovered, and reused for multiple missions. Now this is a big deal because the rocket usually used once then discarded। एक बार यूज किया, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम उसको रीयूजेबल बना रहे हैं, so it's basically like being able to refuel and reuse an airplane instead of throwing away after one flight, right? Are you getting? जैसे अगर आपने एक कार है और एक कार को आप डेस्टिनेशन ए से फ्रॉम डेस्टिनेशन ए टू बी, ओके, आपने डेस्टिनेशन ए टू बी कवर करने के लिए एक कार खरीदी है, राइट? नाउ व्हाट हैपन अगर आप ए बी कवर करने के बाद इसको डिस्कार्ड कर दे रहे हो? सो नीड more number of car
stars for covering different destination, for covering multiple destination, right? And this won't be feasible. ये इकोनॉमिकली पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा ना। रॉकेट्स के साथ भी ऐसे ही होता है कि नॉर्म क्या है, रॉकेट यूज कर लिया जाता है उस जिसका scientists throw, but not scientists, but basically it's not possible to use it again, but scientists make them reusable, then can use it again and again. And it's just like being able to refuel and reuse a car instead of throwing it away after one drive, right? It's similar to that. The challenge that SpaceX has been reusing it, Falcon 9 रॉकेट्स फॉर इयर्स, है ना। जो स्पेस एक्स है वो काफी टाइम से फैल्कन 9 रॉकेट यूज कर। फैल्कन 9 is designed to land on platforms in the but with Starship and its headers, right? फैल्कन 9 अब काफी टाइम जो स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट काफी टाइम से यूज कर रहा था। अब स्पेस एक्स ने एक न्यू मिशन, एक न्यू इनिशिएटिव करने का सोचा। उन्होंने क्या किया, फैल्कन 9 इज डिजाइंड ऑन it's designed on platforms in the ocean, but स्टारशिप और सुपर हैवी बूस्टर के साथ स्पेस एक्स ने एक न्यू चीज करी। उन्होंने क्या किया, स्पेस एक्स वॉन्टेड टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग, दैट इज कैचिंग द बूस्टर। बूस्टर कैच करना, जैसे ही वो नीचे आएगा उसको अपने रोबोटिक आर्म से कैच कर लेना, right? So that's what SpaceX did. It caught the booster as it came down using its robotic arm. Now, why is this challenge? Imagine, just imagine a rocket returning from space weighing thousands of tons and coming down fast. So it's like trying to catch a flying school bus with chopsticks. Right. Now, this is quite interesting. And the risk is high because if the catch goes wrong, it could damage the rocket or the tower. राइट, तो आप देखो तो कैसे उन्होंने क्या किया कि एक बूस्टर जो कि वापस आ रहा था अर्थ की तरफ, उसको कैच करना, राइट। Now, that's where Mechazilla comes in. This giant structure is attached to the launch tower. Okay? देखो आप इस फोटो में भी आप देख सकते हो, राइट। सो मेगाजिला क्या है, बेसिकली इट्स अ जायंट स्ट्रक्चर एंड इट इज अटैच्ड टू लॉन्च टावर। इट हैज रोबोटिक आर्म्स दैट रीच आउट लाइक चॉपस्टिक्स, जैसे चॉपस्टिक्स होते हैं ना, चॉपस्टिक्स कैसे ग्रैब करते हैं, राइट। तो चॉपस्टिक्स की तरह इन्होंने क्या किया, सुपर हैवी बूस्टर को कैच कर लिया व्हेन इट रिटर्न from the sky, right? So, unlike traditional rocket landings where rockets land on a pad or in the ocean, SpaceX mission is to have the booster caught mid-air by these robotic arms. Robotic arms को कैसे कैच करना है वो उन्होंने करके दिखाया है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, गूगल कीजिएगा, यूट्यूब कीजिएगा, और कैसे उन्होंने कैच किया, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। प्लीज गो टू द यूट्यूब एंड हैव अ लुक एट इट। नाउ this whole situation is like a crane that's tall enough to reach the top of the rocket, and as the booster comes back to earth, Mechazilla's robotic arm carefully grab it. आप इमेजिन करो कितना इंटरेस्टिंग है ये कि जो स्पेस बूस्टर स्काई से अर्थ की तरफ आ रहा है और मैकेजिला के रोबोटिक आर्म ने इसको केयरफुली पकड़ लिया। नाउ दिस अलाउज फॉर क्विक
recovery, and immediate reuse. And it happened on October 13, 2024, and SpaceX pulled off this incredible feat, right? And after launching this super heavy booster successfully, so instead it began its return to earth. क्या हुआ था 13 अक्टूबर को, इस आर्टिकल में भी मेंशन है, आप देख सकते हैं कि संडे को क्या हुआ था कि बेसिकली सुपर हैवी बूस्टर लॉन्च किया गया। उसके बाद जैसे ही वो स्टारशिप से सेपरेट हुआ, इन अर्थ की तरफ रिटर्न किया। सो इंस्टेड ऑफ लैंडिंग ऑन अ पैड और फ्लोटिंग इन द ओशन, इट नेविगेटेड टूवर्ड द लॉन्च टावर की तरफ ही नेविगेट किया गया, और रोबोटिक आर्म्स ने कंट्रोल और प्रिसीजन टेक्नोलॉजी से इट it caught the booster, a jaw-dropping moment. It was a major milestone in space travel, students. And the Starship spacecraft, meanwhile, continued its journey and splashed down in this Indian Ocean. Both the booster and Starship are designed to be reused, reducing cost, and it can make space travel more sustainable. Now, right now, why is this important? Why should we care about this new way of catching rockets? There are, students, several reasons. Number one is efficiency. If we are going to reuse rockets without needing to build new ones for every mission, it's gonna save lots and tons of money. So instead of spending millions of dollars in each launch, SpaceX can now refuel and reuse rockets more quickly, right? And the faster SpaceX can recover and reuse a rocket, the quicker they can prepare for the next mission. So this could allow for more frequent space missions, perhaps even daily launches one day, right? And अगर हम कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हैं और स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं रॉकेट लॉन्चेस की, तो स्पेस एक्स कैन मेक डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन मोर एक्सेसिबल. दिस इज a huge step towards sending humans to Mars, right? क्या पता इस टेक्नोलॉजी के बाद हम मार्स में भी एस्ट्रोनॉट्स सेंड कर सके, right? And fewer rockets being thrown away means less waste, right? So reusability of rockets makes space exploration more environmentally friendly. And this successful catch of the super heavy booster marks a significant step towards the future of space travel. And moreover, this technology, it could be key to establishing permanent स्पेस मिशंस, जहां पर फ्रीक्वेंट स्पेस मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन कैरी आउट किया जा रहा है, राइट? तो इन सब से ये इस टेक्नोलॉजी से, स्पेस एक्स की सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी से ये सारी चीजें, पॉसिबिलिटीज अब इंक्रीज हो गई हैं, right? Now, students, so thanks for listening and keep looking up at the stars. Who knows, maybe one day you'll be on a starship heading to Mars, right? Bye bye, have a happy learning.